Hello, assalamu alaikum all. I'm Irfan and welcome to this video series. Previously, I made videos on Islamic studies and criminology. This time, let's have a look at the map of United States of America. Now, United States of America got its independence in 1776. Well, actually, it did get its independence in 1783, and there was a war of independence that started in 1776. Now, let's have a look at the history of America. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कौन से लोग थे जो कि कोलंबस साहब के आने से पहले यहाँ पे रह रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट था, ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये सेंट्रल अमेरिका जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रह रहे थे। ठीक है, इन लोगों की हम अब डिस्कशन करते हैं कि इस अमेरिका के किस पार्ट में कौन से लोग रह रहे थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक डिवीज़न करते हैं। देखें, लेट्स डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे मिसिसिपी रिवर, ठीक है, द ग्रेट मिसिसिपी रिवर, ठीक है। द ग्रेट मिसिसिपी रिवर के इस इलाके को क्या कहते हैं? ईस्ट ऑफ द मिसिसिपी। इस सारे को क्या कहते हैं? ईस्ट ऑफ मिसिसिपी, ठीक है। और इस इलाके को क्या कहेंगे? वेस्ट ऑफ मिसिसिपी। क्या कहेंगे? वेस्ट ऑफ मिसिसिपी। आई एम राइटिंग इट शॉर्ट, MISS, ओके। नाउ this area, in this area there were two kinds of people. I'll divide this. In the top of east of the Mississippi, this area, there was the 5 nations of Iroquois. Who? The 5 nations of Iroquois. Five nation of Iroquois. मैं आपको in a little bit of time I'll let you know who were those 5 nations. इन लोगों ने आपस में एक अलायंस किया था जिसे ग्रेट पीस कहते थे। क्या कहते थे? ग्रेट पीस, ठीक है। This was to the north, to the east of Mississippi, now to the south. To the south there were रेड एंड वाइट टाउन्स। कौन? रेड एंड वाइट टाउन्स, ओके। नाउ आपको मैंने कहा ये वेस्ट ऑफ मिसिसिपी है, ये ईस्ट ऑफ मिसिसिपी है। बीच वाले इलाके को क्या कहेंगे? प्लेन। क्या कहेंगे इसे? प्लेन, मैदानी इलाका। इन दिस एरिया, इन द प्लेन एरियाज, विच काइंड ऑफ पीपल लिव्ड हियर, ठीक है। लेट्स डिस्कस दैट। इन लोगों को बफलो हंटर्स भी कहते थे, ठीक है।
यहाँ पे क्रोस के नाम से लोग रहते थे, एंड द टॉप ऑफ दिस देयर वर दी चेनेस, ठीक है। So this is Chenas, this is crows, okay. Buffalo hunters, the plain. In this area, the area that is called as the New Mexico, क्या कहते हैं, न्यू मैक्सिको के इस एरिया के अंदर आपके एरिज़ोना का जो एरिया है, this area is called as Arizona. यहाँ पे जूनी एंड होपी, ठीक है, जूनी एंड होपी, एंड दे वर मिल के एंड टुगेदर दे बोथ वर कॉल्ड एज अनासाजीज। हु? अनासाजी इन्हें कहा जाता था, ठीक है। इसको कहते हैं साउथ वेस्टर्न कोस्ट। क्या? साउथ वेस्टर्न कोस्ट, साउथ वेस्टर्न कोस्ट, राइट। जूनी, होपी, अनासाजी, ठीक है, एरिज़ोना, ठीक है, एंड दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू मैक्सिको, ठीक है, न्यू मैक्सिको। In this area who were living, ये पुरानी बातें हैं, जो लोग यहाँ रह चुके हैं। अब तो ये लोग यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी हिस्ट्री सेव्ड है इनके म्यूज़ियम्स के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे इंडियंस थे। कौन थे? इंडियंस के, रेड इंडियंस। हु? Red Indians, alright। यहाँ पे कुछ इंडियंस थे जिनके नाम हैं क्या? नूटकास, कवाकीटूस, and Haidas. The names are a bit peculiar, but you can't do anything but to remember them, okay? इस जगह पे there were forests, okay? Forests. These are trees, okay? I'm trying to draw some trees. Please mind my drawing. Don't be annoyed, okay? And this area, this is the western coast, okay? As we discussed, the western coast, here lies the Los Angeles, LA, okay? And to this area to the left you've got as the Pacific, okay? The Pacific Ocean, the peaceful waters, okay? यहाँ पे क्या है? Atlantic है। You getting my point? ठीक है। I discussed the 5 nations of Iroquois. The starting 13 colonies, जो स्टार्ट के 13 colonies थे अमेरिकन्स के, जिसके अंदर which colonies? The first colony that came into being was let's start with the Rhode Island, okay, then Massachusetts and so on, okay. These were the 13 colonies. ये कहाँ पे थे? ये इस इलाके में थे 13 colonies, okay. The first colony was Plymouth. Now I remember, okay. So these are the 13 colonies. ये यहाँ पे हैं। अब 5 nations
of Iroquois. I told you कि there were the 5 nations of Iroquois. वो कौन से थे? The 5 nations of Iroquois was the Mohawk, Seneca, and Oneida, Onondaga, and Cayuga. Quite strange once again. Mohawk. Number 2, Seneca. Have you heard of the Seneca waterfalls? In gender studies, Oneida and Onondaga and Cayuga. You getting my point? The Southeast was the Confederation for Defense. ये क्या थे? इन्होंने आपस में confederation बनाई and they unified a political system. They created their own system, right? So this is the whole explanation of the map, the historical map, the historical map के कौन से लोग यहाँ पे क़याम पज़ीर थे. I hope you understood. ठीक है. I tried to explain to you the journal, the explanation of where and what kind of people, what were their names, they lived here. There is a great disagreement about these. Okay, this is not the final explanation. There's a great disagreement, but this is one of the opinion that is considered as acceptable. I hope you enjoyed it. Please share it and like it, and tune in for more to come.